Amen. These are the most important days. These are the days where we got to really dedicate to pray and worship. और सचमुच इन दिन में हम देख रहे हैं कठिन जो दिन है और सचमुच प्रभु को ढूंढना और प्रार्थना करना एक समय है। We as a church, we are studying on the topic of fear of God. हम कलीसिया होने के नाते इन दिनों में एक विषय के ऊपर बात करें, लगातार जो विषय है प्रभु का भय मानना। Listen, fear is normal. ये भय होना एक आसान सी बात है। Every one of us fear. हर ये कोई जो है भय मानता If anybody say I have no fear, he is sick. अगर वो कहता है कि मेरे जीवन में भय नहीं है, ऐसा है तो वो कहने की मतलब कि वो बीमार है। It's a sickness called amygdala. और ऐसे एक बीमारी कहा जाता है अमीगडाला बोलकर। Now it's a kind of it is caused by a genetic disease known as Urbach-Wiethe disease. और वो Urbach-Wiethe. वो जो जन्म से ही और पूर्वजों से आई हुई एक बीमारी जैसी। People of this sickness, वो जो बीमारी होती है they are unable to experience fear. और वो लोग कभी भी भय का सामना And this disease destroy their life. और ये जो बीमारी उनको संपूर्ण तरह से नाश कर देती है। There were 400 people recorded with this sickness. और वहाँ सर्वे में जब देखते हैं तो 400 लोग जो है उनका नाम रजिस्टर किया गया, पता चला। When people who don't have fear, the lack of fear allow them to get into dangerous situations. जब उनके जीवन में भय नहीं होता है, तभी कमी होने के नाते भय वो गलत और कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं। Which could have been avoided. और उस बातों को हो सकता है। It's like one poisonous snake. ओ ऐसे उदाहरण में जिस तरह से When सांप when you don't have fear, जब भय को ये करते हैं, you don't realize and you can get bitten by the snake. अगर आपको भय नहीं रहेगा तो वो जहरीला सांप आपको काट सकता है। Fear is not bad. वो जो भय होना वो Fear is one of the natural feeling. वो जो भय होना एक स्वभाव है हमारे हर But एक जीवन। where we apply fear makes all the difference. और कहाँ पे उसका उपयोग करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है सब कुछ। You know, fear is an uncomfortable, crippling feeling. और भय जो ऐसा है कि वो तसल्ली नहीं देता है, ऐसा अवस्था में। How many of you are frightened? You know, when you get frightened, your throat get dry. Correct? कितने लोगों को पता है कि जब आपको भय लगता है तो आपका गला You want to say and it's not coming out. आपको कुछ कहने के लिए चाहते हैं बट आपके मुंह से शब्द नहीं आते। Some people I noticed their lips start quivering like a और मैंने देखा कई लोगों का इवन होंठ भी लबलबाते हैं। Some people feel butterfly flying inside the stomach when they get fear. जब उनको भय होता है तो कई लोग बोलते हैं कि पेट में कुछ ना बटरफ्लाई जैसा इधर उधर उड़ रहा है। Some people get loose motion. और कई लोगों को लूज मोशन भी हो जाता है। And some people go blank in their head. और कई लोगों को ना पूरा तरह से अंधेरा हो जाता है। You know, the fear bring the worst out of you. और भय जो है उनके जीवन से बहुत कुछ उनके The more you fear, जब बहुत ज्यादा आप भय मानते हैं, more scary the things become. और ज्यादा जो डरावनी बातें आपके जीवन What I learned from reading is that whatever you're frightened the most, that's what you go to attack. और एक महीने पढ़ते हुए तो समझा है कि जिस बात को आप ज्यादा सोचते हैं उस बात से ही आपको डर में आप whatever you fear the most, you must go and address. और जो कुछ आप डरावनी बात को रखते हैं वही जाके आपके जीवन में हो। So the fear is an alarming thing in our life. और जो भय हमारे हर एक के जीवन में होने वाली बात है। Trying to remove fear is like removing the alarm clock. You know, if the big house, they have an alarm system. If anybody try to break in or touch their gate, alarm goes off. और जो भय होता है हमारे जीवन की एक आसान नहीं है उसको निकालना हमारे जीवन इस तरह से कि एक जो बड़े घरों में अलार्म होते हैं जैसे कहाँ पे उसको टच किया तोड़ नहीं वो बजने लगता है उस तरह से हमारे जीवन में। If you go to Europe and America, every house has a security system. और यूरोप में या हर दूसरा गांव में जाएंगे तो वहाँ पे हर घरों में रक्षा और सिक्योरिटी। Whenever they go out, they put the number and the door is locked. Everything is locked. If you try to touch the lock, it makes noise. Telephone rings in the police station and on their phone.
और जब वो लोग And the security उनके agency. घरों में उस तरह का वो जो सिक्योरिटी रहता है, जो उसको लॉक किया जाता है, अगर कोई उसको तोड़ने के लिए कोशिश करे तो फोन बजने लगता है, या पुलिस में भी एक कॉल वहाँ पे चला जाता है, तो इस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी। Now we have cameras. You know, I put cameras all around my house. और अभी इन दिनों में कैमरा है, जैसे कि मेरे घर पे भी मैंने सब चारों Our office, कैमरा our लगाया, ऑफिस kitchen. में, किचन में, सब जगह पे। So anytime we have anything, we are suspicious, something lost, we go to the cameras and check. अगर हमको लगता है कि कुछ हुआ है या कुछ गड़बड़ लगते है, तो हम जाकर कैमरा में वो पता करते हैं। Just because the alarm system make too much loud noise, which is irritating, और जो अलार्म सिस्टम होने के तो उसका आवाज बहुत आने से कारण वो तकलीफें पहुंचने की, none of us go and remove the alarms. और कोई भी जाके उसके कारण उसको अलार्म को You निकालते know, नहीं। have you seen some people write on their bike and their t-shirt, no fear? और कई बार देखा है आपने, कई लोगों के ना टी शर्ट के ऊपर भी लिखा रहता है कि Or on the car, no fear. या कार उनके ऊपर लिखा रहता है। What I learned is that मैं इस बात को the fellows who have that sticker on their bike or car, no fear, he has so much of fear. अगर जिस बाइक के ऊपर, जिसके भी कार के ऊपर इस तरह का स्टिकर है, तो मैंने ये देखा कि सचमुच वो लोगों की जीवन में ज्यादा वो Just लोग डरते हैं। because you put a sticker, your fear doesn't go. आपने उस स्टिकर को लगाया, भय या डरो मत बोलकर, वो डर नहीं चला In जाएगा। fact, the fear never goes. और सच्चाई कही तो वो डर चला नहीं जाता। Fear is our constant companion. और वो जो है डर हमेशा हमारे लगातार हमारे साथ Now, रहने fear वाला है। can be used as your friend, आप वो डर को एक अपने दोस्त के रूप में उसको or स्वीकार कर fear सकते हैं, can become your enemy. और या डर को आपका दुश्मन की तरह उसके It's साथ all depends on how you respond to the fear. सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है, जिस तरह से आप उसका सामना करते हैं। The fear of fear can be sound like you are locked in a cage of insecurity. और वो जो डर होता है कि इस तरह से भी हो सकता है, आपको अपने आप को बंदीगत में रख दे। So fear is normal. और जो डर है हर एक के जीवन में, There is a place to apply fear. जहाँ पे उसको लगाना चाहिए, उपयोग करने के लिए, It's mentioned in the Bible. वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाइबल में किस Fear तरह से comes only with God. Fear of God is the beginning of the knowledge, is the beginning of wisdom. और हम देख पा रहे हैं शास्त्र में, और भय मानना कि परमेश्वर से पहला ज्ञान और परमेश्वर से वो आशीष है। Fear of God makes you bold. और जो भय है आपको और भी तंदुरुस्त बनाता है। How many of you agree that David had the fear of God? और Do you agree? आप सब कितने लोग मानते हैं कि दाऊद के पास भी इस तरह Do you know when David went to the battlefield to face Goliath, this is what David said to Saul and other people. और सौल और वहाँ के जो लोग हैं, उनको दाऊद ने जब गए थे वहाँ पे, दाऊद जो गोलियत के साथ जो लड़ाई की, तब इस बातों को कहा था। David was a shepherd boy looking after the sheep in the field. और दाऊद जो है एक चरवाहा होने के नाते भेड़ बकरियों को संभाल। He said, if ever a bear or lion comes and take one of my sheep, अगर कोई भी मेरे बकरी को या ना पकड़ने के लिए जो लायन come and take अगर away. वो लेके जाने के लिए आएगा, I will go after them मैं उनके पीछे चला जाता and हूँ, I'll take my sheep out of their mouth. उनके मुंह से मैं निकाल के ले लेता हूँ मेरे बकरी उनको। If they don't, I will hold their bear and I'll tear them apart. अगर वो छोड़ रहे नहीं, तभी उनका मुंह को फाड़ देता हूँ मैं। Was David bold? क्या दाऊद? What if I lock you up in a room with the lion? क्या आपको अगर मैं एक रूम में डाल दूं जहाँ पे You will die there only by heart सिंह attack, by fear. आपको डर हो जाएगा, देखते ही आपको But heart David attack said, I would go after the lion or bear and I'll tear him apart and get my lamb back. और कहता है दाऊद, मैं उनके पीछे जाऊंगा और मैं भेड़ों को मैं निकाल के उनके मुंह से उनको फाड़ के लाता हूँ। Look at Moses. देखिए मूसा को, Bible says he was the most meekest man on the face of the earth. शास्त्र कहता है सबसे नम्र भरा इंसान, He had the fear of God. उसके जीवन में भय था। But he was a bold leader. परंतु हम देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली He भय walked जैसे खड़ा up to होने वाला Pharaoh's एक palace. अगुवाई था। He walked up to Pharaoh's palace और वो जो
जो पैलेस में फेरो का वो धैर्य से गया, whom he ran away 40 years back out of fear of death, fear of them killing him. और 40 साल पहले वो जो वहां से भाग निकला था जिस बातों को लेकर, Because he was frightened they will kill him. ताकि उस बात को वो डर रहा था कि वो लोग उनको मारेंगे। Now he stand in front of Pharaoh and say, "Let my people go." अभी उनका सामना करते वो कह रहे हैं, अभी मेरे लोग जाने दो। Look at Peter. देखिए पतरस को, Do you believe Peter had fear of God? क्या आप विश्वास करते हैं कि Of course he had. पेतरस के जीवन में He भी loved था? Jesus so much. हाँ, उसको भी है और वो सचमुच बहुत Every प्यार करता था mistake he यीशु का। cried and he said sorry to Jesus. और यीशु के पास उसने रोया भी और क्षमा भी मांगी। After the crucifixion and resurrection of Jesus, जब यीशु का मारना और उसके पुनरुत्थान होने के बाद, you know, Peter denied Jesus and ran away. पता है आपको 3 बार भी पेत्र ने दिखाया यीशु before. को और यीशु मरने से पहले But और now, चला गया था बाकी। Peter stood in front of all the high priests and all the leaders of Judaism, said that I preach Jesus whom you crucified. और अभी देखते हैं हम जिस तरह से के जिसको आपने मारा उस यीशु के बारे में बताते हुए So, उन अधिकारी You पंडित लोगों take के सामने खड़ा Nehemiah, हुए। you take David or हम Moses or Abraham or Paul or Jesus, you can see that all these men had so much fear of God, but they were bold like lions. हम देखते हैं शास्त्र में जिसका भी नाम हम लेते हैं, चाहे दानियल से लेकर हर एक को, जीसस को लेकर उनके चेलों को लेकर, वे सब लोगों के जीवन में प्रभु का भय था One of और the- पूरे वो लोग धैर्य से खड़े रहे। One of the greatest blessing the fear of God brings in your life, it makes you bold. और सबसे बड़ी बात ये है कि भय मानना आपको धैर्यशाली बना देता है। But the fear of the world makes you weak. परंतु दुनिया का जो भय आपको कमजोर बना देता है। When you fear about your future, जब बहुत लोग अपने भविष्य or को when you लेकर fear भय about करते हैं, somebody threatened and they are going to come to attack you, or you have the fear of somebody knows your secret, when you get any worldly fear, your mind goes blank, your heart starts beating fast, your throat becomes dry, you get butterflies flying in your stomach, and you can't make decision, and you feel weak and fragile. आप देख सकते हैं इस दुनिया का भय अगर मानेंगे, उस बात को लेकर चलेंगे, तो तभी आपको कुछ पता नहीं हो जाता है, आप सब कुछ उलझन में आके क्या करना कैसा करना But the पता नहीं fear of God makes us bold. परंतु प्रभु का भय मानना वो आपको धैर्यशाली Those बनाता who learn to fear God, है। जो कोई सीखता है प्रभु का भय they मानने don't fear anybody. वो और किसी बात को डरते नहीं है। I often say that fear God and fear none, मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ, प्रभु को भय मानो और किसी बात को नहीं, or don't fear God and get frightened of everybody. नहीं तो प्रभु को भय मत मानो और हर चीज को भय मानो और चले जाओ। Believe me, if you have the real fear of God developed in your life, अगर मैं विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ, अगर सचमुच आप इस तरह को no बढ़ोतरी matter करते हैं, what प्रभु का भय situation, मानते हुए, no matter what situation आप you किसी go, भी अवस्था में आप होने के नाते you will not be worried. आप चिंता न करें, Because you have that deep conviction that God is with me. क्योंकि इस तरह का आपका सोच होता है आपके अंदरूनी कि प्रभु आपके साथ है। Say Sunday we baptized 6 or 7 people. और गए हफ्ते 6 लोगों के हम लोग बपतिस्म And दिए। when I was baptizing them, I shared from the Word of God. और जब भी मैं उनको बैप्टिज्म दे रहा था, प्रभु के वचन से उनसे कह रहा था, One of the promises Jesus gave it to his disciples, प्रभु ने सबसे बड़ा एक वादा अपने चेलों को दिया। he said, you go and baptize people in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Behold, I'll be with you till the end of the age. और उन्होंने कहा, जाओ इस दुनिया के और चेले बना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से उनको बैप्टिज्म दो, So, दुनिया के अंत तक। All those who are baptized has that promise of Jesus in their life. Jesus said, I will be with you till the end of your life. जो भी किसी ने बैप्टिज्म पाया, उन सभी लोगों को ये वादा है कि प्रभु ने कहा, इस दुनिया के अंत तक मैं रहूंगा और ये उनके। But the trouble is we responded too much of worldly fear. जब एक प्रॉब्लम इस तरह से समस्या हो जाती है कि दुनिया का बातों पे हम लोग सामना And करते हुए इतना we भय मानते don't हैं hear the voice of God. और हम परमेश्वर का आवाज को सुन Say, नहीं now पाते। we are sitting in this room. जिसा हम सब लोग यहाँ पे Do बैठे you know there are millions of pictures and voices and waves in this room, in this air? आपको पता है इस जगह पे
ना मिलियंस हजारों यहाँ पे अलग अलग पिक्चर है, आवाजें है, There is so many powers are here. और बहुत कुछ ऐसे सामत वाले Your पावर है। mobile phone is connecting with some of those powers. और आप कहीं आपके मोबाइल के कुछ बातों If you को have a जुड़े, world radio, अगर आपके पास रेडियो you है, can tune into hundreds of channels आप बहुत कुछ अलग अलग चैनल के ऊपर उसको ट्विन कर from सकते all हैं around the world. और वो पूरे दुनिया में हो। So this area where we are, it's not just air, there is much more than here. अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बैठा जगह वो खाली हवा नहीं है, परंतु उससे भी ज्यादा भरपूर है। But can you hear anything? क्या आप सुन पा रहे हैं उसको? Any of you can hear? क्या आप सुनते हैं उसको? No, we can't hear anything. नहीं, हम उसको You know नहीं सुन why? पा रहे। क्यों पता है? Because we are not connected. क्योंकि हम उसको जुड़े हुए नहीं। But if you connected through your iPad or through your phone or through your radio, depends on what you tune in, you get different things. और जब आप अपने फोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, आपके आईपैड के द्वारा जब आप उसको बदलते हो उस चैनल को, तभी वो स्टेशन वो बात को आप सुन We पाएंगे। have to learn to tune into God, not to any man, not to all kind of stupid fears. तो इसीलिए हम सब लोग प्रभु में उसको अपना ट्यून को बदलना और जुड़ना चाहिए। You can sit here, there. आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, If you have the right gadget और आपके पास उस and सही you know how to tune, अगर आपको पता है किस you तरह से can उसको बदलना है, pick up things from Russia or Germany or from England or America or France or China. It doesn't matter where you want, you can go anywhere वो from चाहे there. कहाँ पे भी हो, रशिया, इंग्लैंड, वहाँ का कौन सा भी देश का हो, वहाँ का भी आप यहाँ बैठे हुए जगह So से how much more we can believe that we can get connected to God? Come on. तो विश्वास कीजिए कि उससे भी बढ़कर हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। There is a power and the voice of God is available in this place. तो परमेश्वर का सामर्थ और उसका ना आवाज हमेशा यहाँ पे हाजिर है। Those who learn to connect, जो कोई सीखते हैं जुड़ने के लिए, they hear the voice of God और वो लोग सुनते हैं परमेश्वर का आवाज, and they receive the power of और वो God. लोग सामर्थ पाते हैं परमेश्वर। You know, some of the benefit of fearing God. वो जो कुछ बातें ऐसे आशीष Somebody परमेश्वर said को मानना, fear of God is a requirement for you to become rich and honor and life. और किसी ने इस तरह से कहा ये जरूरत है कि प्रभु का भय मानना की, ताकि आप आशीष पाए बहुताई से और आपको आदर मिले और आपका जीवन भर। Bible says by humility and fear of the Lord, God brings riches, honor and life. इसलिए तो शास्त्र कहता है प्रभु का भय मानने से नम्रता और आदर और वो सब कुछ आपको मिल जाता है। Some of the benefit of the fear of God. और यही तो है वो सारे फायदे। Fear of God gives you strength to turn away from evil. और परमेश्वर का भय आपको सामर्थ्य देता है पाप से मुड़ने के लिए। Fear of God gives you knowledge. और प्रभु का भय आपको ज्ञान देता है। Fear of God makes you wise. और प्रभु का भय आपको Fear बुद्धिमान of God gives you long life. और प्रभु का भय आपको लंबा जीवन देता है। Fear of God gives you life in abundance. और देखते हैं प्रभु का भय आपको बहुताई का जीवन देता है। The fear of God brings happiness. और प्रभु का भय आपके जीवन में आनंद लाता A है। lot of people are unhappy because they think they need to have so many things, then only they can be happy. But when the fear of God comes, you learn that you don't need anything. You need only God and you are happy. कई लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ चीजें होने के नाते उसके बाद में मैं वो आनंद उठा पाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु का भय मानने से fear वो of सब God. कुछ आप पाएंगे। In fear of God, you receive instruction from God to be wise. और प्रभु का भय मानने से प्रभु से आपको सही मार्गदर्शन मिलता Fear है। of God brings healing. और प्रभु का भय आपके जीवन में चंगाई Fear लाता of है। God teaches you to worship God. और प्रभु का भय आपको सिखाता है पवित्र परमेश्वर का The आराधना करने के लिए। true worship is built on the fear of God. सच्ची जो आराधना है प्रभु का भय के ऊपर निर्बल रीति से बांधी हुई। Fear of God brings God's provision. प्रभु का भय मानना आपकी हर जरूरत को Fear पूरा of करता है। God gives you access to God's presence. और प्रभु का भय आपको मार्ग देता है कि प्रभु के चरणों में Fear आने of के God लिए। gives a strong, satisfying life. आपके जीवन में बहुत सामर्थशाली अच्छाई When you have का fear of- आनंद आपको समाधान When you देता have है। the fear of God, God reveals the secrets of His heart to you. और जब प्रभु का भय मानते हैं तब प्रभु कुछ गुप्त बातों का आपको बताता है सब। Those who have fear of God, they experience God's goodness.
और जो कोई प्रभु का भय मानता है, प्रभु का अच्छाई को आनंद उठाते हैं, Those who have fear of God, God deliver from the trouble, deliver them from the trouble. और जो कोई प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु उनको हर अवस्था की बुराई से निकालता है। When you have fear of God, you receive the Father's love from God. जब आप प्रभु का भय रखते हैं, तभी परमेश्वर जो है हमारा पिता स्वर्ग उसका प्यार And आपको, when you have fear of God, you bring pleasure to God. और जब प्रभु का भय आपकी जीवन में रखते हैं, There are hundreds तो of आप things. प्रभु को संतुष्टि लाते हैं। You can just open your Google and say benefit of fear of God. You come across a lot of things. What are the benefits of the fear of God? आप यूं गूगल में डालिए प्रभु का भय मानने के विषय में क्या आपको उसका फायदे, बहुत कुछ आपके सामने आ जाएंगे। So fear of God brings so much blessing. और प्रभु का भय मानना आपके जीवन में बहुत Now, ही there are a few things I want to share. Number one, remember, fear is healthy. और ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ यहाँ पे, So if और you- जो भय मानना वो अच्छा है। If you have fear, अगर आप के पास भय है, don't pretend as you don't have fear. तो आप ऐसा मत दर्शाओ कि आपको भय You're नहीं लगता है। really, you're scared and you're pretending as you're not scared. Everybody around you know that you're scared and you pretend. Everybody knows you're pretending and you become a fool. अगर आपको भय आप मानते हैं, पता है, और आप दर्शा रहे, लोगों को दिखा रहे कि आपको भय नहीं लगता है, इस तरह से आपको बर्ताव करने से आजू बाजू Now, रहने वाले लोगों को the पता fear चलता है is- कि आप कुछ जो कर रहे गलत कर रहे। The fear is hardwired in your brains. और ये कुछ जो है भय आपके मन के अंदर ही है, Now, fear is normal. और ये जो है आसान है। Now, fear gives four response. One is you get frozen and you don't know what to do. और पहले हम देखते हैं कि भय इस तरह से हमको बातों को दिखाता है। There are people died in fear. ना कई लोग मर गए उसकी वजह से, Their heart just stopped functioning. और उनका हृदय काम करना बंद हो गए। The shock, they collapsed. एक ही बात शॉक जैसा हो गया। I had और seen वहाँ पे people बंद हो dying गए। out of fear. और ये भय इस तरह से हो। Then the next response, fight. और दूसरी बात ये थी कि आप उसका सामना करते, लड़ाई। You have a fear, he's going to fight with you. So if you're a clever man, what do? Before he comes, you go to fight with him. अगर आप होशियार है, अगर कोई आपका सामना कर रहा है, अगर आपके लिए लड़ाई करने के लिए वो आने से पहले आप जाकर लड़ाई He करें। may not want to attack me at all. हो सकता है कि वो सामने वाला है आपके ऊपर हावी नहीं होना But चाहता। I felt he's going to attack me, so I went to fight with him. मुझे लगा कि मेरे ऊपर वो हावी होएगा, लड़ाई करेगा, इसलिए मैं जाके उससे लड़ाई कर। Later, like a fool, I realized he was not against me. बाद में मुझे पता चल जाए कि ओ मैं मूर्ख की ऐसा, ये सच्चाई नहीं है, ऐसा So, ऐसा बन जाता है। sometimes fear is imaginary. कई बार जो भय होता है कि वो विचार है सिर्फ, Your mind is good in fabricating things. ऐसी बातों को सोचने में आपका मन बहुत In English, it's called building castle in the air. तो इस तरह से कि ओ हवा में सब कुछ भांगना। You heard one word, somebody said, and then another word, another word, another word, another look, another thought. You know, you just build और आपने कहाँ से सुना, इधर से उधर से एक अलग अलग शब्द things out of nothing. और कुछ भी नहीं वहाँ से, Then you feel, they don't like me. पता चलता है कुछ भी नहीं है। So, when you get fear, you freeze. जब आपको भय आपको आते हैं, तो आप Or you हवा पे fight. बंद हो जाते हैं, या दूसरी आप झगड़ा करने लगते हैं, Or you flight, you run away from there. या तीसरी बात हम देखते हैं कि वहां से आप भाग जाते हैं। You, by running away, you lost the opportunity. आप वो भागते वक्त आपके पास वो जो मौका है उसको गवा You देते had an हैं। opportunity for a good job हो सकता है वो जो अच्छी काम के लिए वो and जो good money. You went वो there. अच्छा पैसे के लिए या अच्छी बात के लिए, Something happened, frightened, you run away from there. You said, no, और no, I कुछ can't वहाँ do पे this. हो गया और आप वहाँ से भाग रहे हैं, ये मेरे बस Has की बात anybody नहीं। of you run away from situation out of fear and you, later you realize, hey, what a mistake I did. आपको क्यों है ऐसा कि आपने ऐसी गलती किया, अरे क्या मैं वहाँ से No, निकल गया, वो I किया। done that. I done that. मैंने भी किया इस तरह से। When I look back, I feel so upset with myself. कई बात मुड़ के देखता हूँ तो अपने आप को नाराज हो जाता हूँ। I don't get upset with God. परमेश्वर के साथ में नाराज। Because in this 33 years, 34 years of serving God, जैसा 34 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, God gave me so much opportunities. प्रभु ने बहुत ऐसे मौके दिए मुझे, For a lot of opportunities, I messed up. और बहुत कुछ मौकों को मैंने गवाया, और Sometimes I had to spend a lot of time to encourage myself कई बार मुझे समय लगा कि अपने आप को उत्तेजित करने के लिए to say, Matthew, chill out.
ओके मैथ्यू, अपने आप को तसल्ली दे। You did what you can. तो आप जो कर सकते थे किया आपने। It's true there are opportunities you तो run away. सच है कि आपके पास जो मौके के आपने गवाए, But what's the point of thinking about आप it? भी सोचने से क्या है उसको, कुछ नहीं। Now get ready to make use of the opportunity that is coming. आप भी फिर से तैयार हो जाए, आपके सामने आने वाली नए मौकों को आप सामना कर सके। And some people get fright in the fear. वो लोग जो भय होते हैं तो संपूर्ण तरह से वो डर जाते हैं, They get frightened. पूरा तरह से डर जाते Now, हैं। if you remain free of fright for a long time, then it became a phobia. Later, it became a sickness. You had to be taken to the hospital, to a psychiatrist or to a neurosurgeon, neuro doctor to treat you with the medicine. अगर आप बहुत देर तक उस डर के कारण आप घट हो जाते हैं या पूरा तरह से डर जाते हैं, तो आप भी थोड़ा दिन के बाद सिक हो जाएंगे, बीमारी में आ जाएंगे, तो बाद में आपको हॉस्पिटल लिया जाएगा या डॉक्टरों को जो है उनको दिखाकर आपका देखभाल किया Being जाएगा। continuously in the fright mode can lead to hopelessness and depression. और कहते हैं कि बहुत देर तक उसी तरह का भय रखना, तो वो क्षण आपको बहुत मानसिक प्रभु So, का है। I want to challenge every one of you, learn to fear God. तो मैं आप सबसे इस तरह से चुनौती देता हूँ The more और you कहता हूँ learn- कि आप सीखिए प्रभु का भय मानने की। The more you learn to fear God, जितना आप प्रभु का भय मानेंगे, less you fear the things of this world. उतना ही इस दुनिया की बातों का जो भय से आने Fear वाली of बात God is the डूब beginning of the जाएगी। wisdom. Fear of God is the beginning of the knowledge. Fear of God brings long life. Fear of God brings happiness. Fear of God brings security. Fear of God brings presence of God. Fear of God makes you a true worshipper. Fear of God makes you confident. Fear of God brings boldness. There are so many benefits of having fear of God. हम देखते हैं प्रभु का भय मानने से बहुत और बहुत फायदेमंद है। वो हमें ज्ञान देता है, प्रभु की उपस्थिति देता है, हमें अमीर बनाता है, हमें आदर देता है, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। हर बात को हम देख सकते हैं कि वो हम भरपूर और लंबा जीवन देता है। The worldly fear pushes you out of God's plan. और प्रभु दुनिया का जो भय है, प्रभु का जो प्लान है, योजना है, उससे वो निकाल के बाहर डाल But देता है। godly fear brings you to God's plan, get you established. और जो प्रभु का भय होता है, जो फिर से प्रभु उसकी योजना में लाता है, आपको धैर्यशाली बनाता है और आपको वो संपूर्ण तरह से बना That's देता है। why God wants us to learn to fear Him. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि So my आप friends, और मैं उसका भय माने। Learn to fear God. तो सीखिए प्रभु का भय माने। Learn to obey Jesus. हमेशा प्रभु का आज्ञा The पालन more करने सीखिए। you fear God, more bold you become. जितना प्रभु का भय मानते हैं, उतना धैर्यशाली आप बनेंगे। Remember, God has wonderful plans for your life. आप याद रखिए, परमेश्वर ने बहुत अच्छी Plans to योजना बनाई। bless you, prosper you, and to give you a future and hope. और वो योजना आपको आशीष करने के लिए, आपको अच्छा भविष्य देने के लिए Jesus. और सब कुछ देके चला। Jesus, who called you, said, I will not leave you, neither I'll forsake you. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं कभी ना छोड़ूंगा ना आपसे Jesus said, I will be with you till the end of the age. और यीशु ने कहा इस दुनिया के अंत तक मैं आपके साथ हूँ। So learn to trust God. इसलिए सीखिए प्रभु से विश्वास Believe in करना और Jesus उसका in भय these मानना। impossible things, impossible times. और इस असंभव समय पे In your difficulty, in your loneliness, in your feeling of alone, अगर आप make अकेले sure make Jesus as the center. अगर अकेलेपन में, इस कष्ट में, दुख में, संकट में है, तो आप सीखिए प्रभु का भय मान के उसके अनुसार बढ़िए। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Hi there. El Shaddai has been working in the field of women and children. We are basically helping the children who are at risk. We run children's homes, shelters, community centers, slum schools, non-formal schools, and various kinds of healthcare program for the children who are deprived. 1 out of every 2 child is anemic, and 1 out of 4 adolescent girls are getting married, forced to marry before the age of 15, and 30 out of 100 girls don't even finish the primary school, those who go to the primary school. So we have a very grim situation when you travel in the villages
and in the remote areas, even in the urban areas, in the slums, people live in a very, very pathetic condition. They don't have anything as basic. We have a government, they are doing work, but the hands of the welfare is not reaching to the people who lives in villages and the poor areas. Some of you are listening to me, who've been supporting the charity over the years, and we are truly grateful for your support. Your support enabled us to do what we are doing. Without your support, it's just not possible what we are doing. So much of money every month we have to spend for the welfare of the children, food, shelter, clothing, stuff. All this happened just because people like you, all those who've been supporting in the past. I just want to say a big thank you for your support. We are truly grateful for what you do. And if you're a person who has not been supporting and you are listening to me, I encourage you to sign up to sponsor a child. It costs 2,000 rupees in Indian rupee or 20 pounds. It gives future for another child. There are a lot of children are waiting for someone to come in to support. We got to thank God that we have a life where we can sit in a nice place and talk, we have a nice house to live. And I believe that we all need to show a little bit of act of kindness to these people who are somehow less fortunate.